हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा हमें दे रखा है Cu3 प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu2 प्लस ई नॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्लस 1.82 वोल्ट्स। हमारे को सेकेंड रिएक्शन दे रखी है 2H2O चेंजेस टू O2 प्लस 4H प्लस आयंस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसकी ई नॉट वैल्यू है 1.23 वोल्ट्स। Explain why Cu3 plus salts are unstable in water. Now let us solve this question. इस क्वेश्चन का पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल वेयर डेल्टा जी नॉट is standard free energy change, standard free energy change. N is number of electrons involved in the reaction. F is Faraday's constant. And E naught cell is standard EMF of the cell. तो हम इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं इफ डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव तो हमारा ई नॉट सेल शुड बी पॉजिटिव देन द केमिकल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस क्योंकि हमें पता है व्हेन आवर डेल्टा जी इज नेगेटिव देन आवर केमिकल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। हमें एक और फॉर्मूला पता है ई नॉट सेल is equals to E naught cathode minus E naught anode. Now let us look at the equation that has been given to us. तो हमें केमिकल रिएक्शन दे रखा है CO3 plus ions plus 1 electron gives CO2 plus. So this is the reaction of reduction. We know that there is gain of electrons, तो यहाँ पे reduction हो रहा है, and we know that reduction occurs at cathode. So this reaction is occurring at cathode. और इसकी हमें E naught value दे रखी है. It is given in the question itself. It is 1.82 volts. Now if we look at the reaction which is occurring at anode, anode पे हमारा loss of electrons होता है, तो 2H2O gives O2 plus 4H plus ions plus 4 electrons. This is the reaction that has been given to us. और इसकी E naught value हमें बता रखी है. It is 1.23 volts. अगर हम इसका नेट रिएक्शन देखें, नेट रिएक्शन, our net reaction is 4CO 3 plus ions plus 2H2O. We will obviously multiply this whole equation by 4 क्योंकि यहाँ पे भी हमें 4 electrons चाहिए to cancel it with them, these 4 electrons. तो हम यहाँ पे 4 से multiply कर देंगे equation को. 4CO3 plus 2H2O gives 4 cobalt plus O2 plus 4H plus ions. हमें अगर यहाँ से E सेल अपनी E सेल वैल्यू निकालनी हो, E नॉट सेल अगर हमें निकालना हो तो इट विल बी E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड. तो हमें पता है दी रिएक्शन विच इज अकरिंग एट एनोड का कैथोड का E नॉट वैल्यू है 1.82 और एनोड का हमारा है 1.23 volts which will be equal to 0.59 volts. तो हमारी E नॉट सेल की वैल्यू आ गई पॉजिटिव. E नॉट सेल comes out to be positive.
So we can say that cell reaction is spontaneous, क्योंकि अगर हमारी ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गई तो हमारी डेल्टा जी नॉट विल बी नेगेटिव. तो नेगेटिव है डेल्टा जी नॉट, तो द सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. दैट मीन्स इट डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल फैक्टर टू कंटिन्यू इटसेल्फ. और हमारी ई नॉट वैल्यू क्योंकि है हमारी पॉजिटिव. सो हेंस CO3 plus is reduced to CO2 plus. Thus, it is unstable in aqueous state. Because our CO3 plus ion gets dissociated or reduced into CO2 plus ion, it is unstable in aqueous state. So this is the final answer to the question. I hope you understood the question well. Best of luck.